Can you hear me now? Can you hear me now? Yeah, I'm audible. I'm audible, right? Cool. So, welcome everyone. Welcome, 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 welcome. So, today the agenda is we are going to discuss 10 questions. We're going to discuss 10 questions, and the main vision, the main goal behind this is we want to solve few of the coding questions and few of the theory questions. So I have 10 questions for everyone. Hello from my side, and good evening. I think it's getting 9:30. Yeah, good evening. So today we are going to solve a lot of questions. There are 10 and 10 questions. Few of them are the coding questions. Few of them are the theory questions. So it's time we should begin now. It's time we should get going the session. So hello from my side to everyone, to all the people who are in this live. And if you have any questions regarding doubts or anything like that, just do let me know. I'll definitely answer. Now coming to the language of this video, we are going to discuss like majority of the part is gonna be in English. The reason why, because we have a few viewers from the south of the India and few viewers from the out of India, so they're from the abroad. So probably we will take care of the language. We are going to discuss everything in the English, right? So that everyone will be comfortable with that one. Cool. So let's go. Let's solve the questions, right? So any point of the video, if my voice goes down or if you're unable to hear me, just do let me know, right? Cool. Cool. Let's go. So first of all, by the way, all of these questions are from different websites. I have taken help of few GitHub repositories to get the questions, and I've taken help of few different websites to get these questions, right? So I'm not sure about the sources. Probably I think W3 resource is the one, and a GitHub repository where I took these questions from, right? So really doesn't matter where I took these questions from. What really matters is we're going to solve these questions, right? That's about it. So let's go. We are going to solve question number one, which says, the question number one says, and I'll try to explain it first. Write a JavaScript function. So we need to create a function, right? Write a JavaScript function to check whether an input. So we need to take a parameter in the function as well. Write a JavaScript function to check whether an input is an array or not. So the question is asking us to do is, it's asking us to create a function. It's asking us to take an input, and then it's asking us whether that input is an array or not. Return, right? Make sure we understand the word return. So I'll go to the JavaScript file. I'll create a function check array, right? And it says to get a parameter, right? So as the question says, write a JavaScript function. I wrote a JavaScript function to check whether an input means a parameter, right? So I have taken a parameter, the input is an array or not. So there are two possible ways. Probably on the YouTube you will find first way. On the internet, on the Google, you'll find again like first way in the majority websites. I'll tell you two ways to do this, right? So hello everyone, you people are ready to understand this one, right? Should we move forward? Should we move forward? Come on, should we move forward? Yes. Okay, let's go. So we are going to discuss two ways, right? Number one way, we need to in order to check this whether this input is an array or not, you go for this array, capital A array dot is array. Is a method available inside this array, capital A array, and you can put any input over here, and that will return whether it's an array or not. First of all, this thing will return either true or false. So basically what we are doing is, with the help of capital A array and the method inside is array, we can offer any input we want, and that will check whether that particular thing is an array or not. For example, I'll teach you over here on the console, right? Let's go. So we have a capital A array dot is array, and if we give 1, is 1 an array? No. So it will give you false. So capital A array dot is array. Is true an array? No. It will give you false. Capital A array is array. Is array an array? Yes. So now you understand that if we offer capital A array dot is array and any value inside it,
That will probably tell us whether that is true or not. Do you understand this? Everyone comfortable with that one? Everyone comfortable with that one? Were you able to understand this? Were you able to understand this? Come on. Yeah. Okay. So capital A array, dot is array, takes a value. If that value is an array, it will return you the true. If that value is false, it will return you the false. Simple as that. Cool. So now we have the understanding of whether to how to find whether a particular input is an array or not, right? So what we'll do, we'll return whatever the answer is. So if I run this check array function and I offer 1 first and I offer maybe an object second and then an array with 1, 2 and 3, and we console log every member of these, every check array answers, we'll get false, true, because first time whatever we have gave inside the check array is a number, second times we have given an object, and third time we have given an array. So that's why we are getting false, true, right? So do you understand this? Are you people able to understand what I'm telling you here? Like, we are discussing things. Is it easy? No? Status for you says no. Probably status for you for the main reason behind that one probably is I think I'm not sure, but I think you're not comfortable with JavaScript. For some reason camera is like getting turned off again, but it's all right, no issues. It'll be live soon. But need to remember this function. Which function? See, in programming, most of the times you need to remember things, right? You cannot expect to nothing to be remembered and still be able to function. You need to remember things. Yeah, Rahul, I've already spoken about it. Like, for some reason, camera went down. The battery is down. I'll be changing the battery very soon. Somebody's changing the battery and I'll be visible. Like, the camera will be on. Okay. Cool. So now we have to see the second one, right? So for the second one, we are moving ahead. Let's go. For the second one, we are moving ahead. So the second way to check the same thing, for the second way, what we'll do, for example, we have an input. Let's say check array goes, just a minute. Now I'll be visible. If everything goes right, I'll be visible. So, for example, if check array, see, you can see my lovely face over here. Very funny face. Nice. Okay. So check array, for example, check array takes 12 as an input, and the input goes inside input, obviously. There's another way to check things out. How we can do this without capital A array dot is array. There's one more way. Would you like to know what exactly the second way is? How many of you want to know the second way to do the same thing, to check whether the particular value is an array or not? Right. At least one person wants to know. Okay. So at least one person. Okay. Right. Few more. Okay, let's go. So what we'll do, we'll say capital A array, just a minute. We'll say capital A array instance of this. Does this works? No. We'll say the value instance of capital A array. Does that works? True. Okay. We were unable to understand what exactly are we talking about, right? See, first of all, let's understand something. Whenever we create an array, it is always given you can say a blueprint. I'll say the instance, right? A blueprint or an instance which is array. I'll explain, don't worry. So what happens is, for example, just a minute. Yeah. So let's say we are born
So I am the instance of my mother and father. Do you understand that? Do you understand that? Everybody is instance of somebody. Yeah. So everybody instance of somebody, right? So we can say if we create an array, if we create an array, that is always an instance of the capital A array. Capital A array is the supreme. See, every array is built by this capital A array, right? Anything you make, and if it's an array, it will somehow link to this capital A array, right? Do you understand that? Come on, do you understand that? So whenever we create an array, it is some at the end of the day, somehow it's gonna connect to this capital A array. So if we made this array ARR, if we made this array is also built. This array is also built via capital A array. Do you understand that? Behind the scenes, it's built via capital A array. Do you understand that? If you have seen Java, if you have seen this thing, new array, probably you might have seen this in some other language, right? So whenever you create an array, it somehow links down to capital A array. Do you understand that? Do you understand that? Come on. If you understand that, so we can do this. If we have an array, if we have this sort of value array, we can do this. See, what we are saying is this value is instance of का मतलब is connected to array. Connected to, maybe you can say is somehow linked to capital A array. Do you understand that? Yeah. So that's how we get to know whether a particular value is an array or not. If that won't be array, it won't be the instance of capital A array. Right? If that won't be array, that won't be the capital A array. Right. Okay, so probably everybody understood, right? So you got to know how to get whether a particular value is an array or not. So I'll make a function check array straight check array, and we have this input over here, and see, if I run this function check array and I give a value like 1, 2, 3, and I need to check whether this particular input is an array or not. So I'll go here and I'll say if input is instance of capital A array, if that would be, it will return true. If not, that will return false. Simple as that. So this will return either true or false. Console log, and if I go there and I can print the values, right? So it will give me true. Why? Because this is an array, right? Now, if we print it few more times and we actually remove this array and put 1 in place of that, and we actually remove this and print Harsh, put Harsh in place of 1, 2, 3. So what will happen is, for the first check array, the input is an array, so it's giving us true. For the second check array, the input is 1, it's giving us false. For the third check array, the input is string, it's giving us false. So were you able to understand this? Yeah. So cool. We are doing good. Now it's time we should move forward. Let's go. So here we have completed the question number 1. Question number 1 was to check whether the input is an array or not. Right? Cool. Utkarsh, see, I've already explained it for like few times. Consider this one. Like what happens is, we needed to create a function. We need to get an input inside the parameter inside a function, right? An argument value which will come to the parameter. So what we needed to do is, we need to get an input to the function, and we need to check whether that particular input is an array or not. So what we did is, we just solved 2 ways to get the same thing, right? The number one way is basically to go for
capital A array dot is array and put that input inside that. That will give you either that input. If that input is array, it will give you true. If not, it will return false. And that was the first way. Second way was basically like we can do this. The value instance of array. That will give you either true or not. If it gives you true, that particular value is an array. If not, it gives you false. Simple as that. So I believe we were able to understand this one, and it's time we should move forward to the question number 2. Let's go. And if anybody has some doubts or something, and if you want to get the explanation again, probably you can watch this video laterwards, because I'll like share this video on the channel after the live will be uploaded on the channel, so you can watch that video later. And we are moving towards the question number 2. Let's go. So question number 2. Write a JavaScript function to clone an array. Write a JavaScript function to clone an array. Okay. Sumit Tanwar. I'm sorry. I have to probably yeah. Okay, cool. So just a minute. Right. Okay, cool. So now we are moving forward to the question number 2. Question number 2 says write a JavaScript function to clone an array, to go to the editor, go to the editor, test data वगैरह वगैरह. But ठीक है, ये तो अपन को टेस्ट करने के लिए दिया गया है. But write a JavaScript function to clone an array. ठीक है, तो अपन को एक array बनाना है जो कि एक JavaScript function बनाना है to clone an array. बहुत easy है. Function and I'll go cloning. ठीक है, cloning नाम का एक function है which will accept an input. अच्छा, बहुत easy question है, extremely easy question. It will accept an input and we need to return a cloned array. ठीक है, extremely easy my friend. What you'll do is you'll create a cloned array. ठीक है, cloned array, just do that and do this input. That's about it. So if we go cloning and we say array 1, 2, 3, 4, 5, and that will return, but it's not returning right now. Why? Because we haven't returned. So I'll go this. If you don't understand this this particular solution, what is happening over here, my friend? See, whenever we give an array as an input, so this array basically settles inside INP. Now what we can do is we can clone that particular array with the help of spread operator. What spread operator does, it basically, whenever you do ... Rudra, thank you very much. ऐसे इतना भी कुछ खास नहीं लग रहा हूँ. So whenever you do ... just in front of an array, what it does is basically it spreads the value of the array members. It spread the value of array and basically the array members, right? So let's go. So we have a particular variable called cloned. Then we have an array. And if we go this ... INP, that's about it. What it will do. So whenever we pass an argument like array 1, 2, 3, 4, which goes inside INP is an array, right? Now what we did right now, we just actually spread the values of INP, which is an array, right? 1, 2, 3, 4. So we have a new variable called cloned, which is an array and contains the same exact values which INP had, 1, 2, 3, 4, and we can return it. Because we have returned, so this function, whenever we'll call it, will get values, right? Will get values, and we can save those values or we can print them straight away. So I'm actually printing them straight away. Cool. So now we have cloned value 1, 2, 3, 4. So the question also says, if we give an array and array also contains a sub-array, it should still copy it. So we need to check whether our solution can do that or not. So we have an array, yeah, and it again contains a sub-array inside it. Is our actually the answer says itself. Is our solution okay with that? Yes, it is. So now it contains 1 and 2 and again an array, right? So we actually were able to solve it. Abhida, yes. Can we get that question? Which question, my friend? Over here. You can get the, this is the question. Question number 2. Shallow copy होगा ना.
I didn't understood. What do you mean? Bhai, can you please explain about the operator? Yeah, why not? Why not? So, yeah, let's go. Let's go. So basically what dot 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 operator does is it basically says if you have an array 1 comma 2 comma 3 and you do this arr2 is equal to arr, what it does, it basically never copies the value, it just creates the reference. So if you don't know, if we remove something from arr2, so basically we are removing from arr2, right? From arr2, so we should get arr2's value 1 and 2, right? Let's see, 1 and 2, perfect. And arr still should contain 1, 2 and 3, but the problem is arr also becomes 1 and 2. Why? Because whenever we try to copy this way, array objects and functions, they never get the real copy and they create the reference. And arr2 is actually not containing the real 1, 2, 3. It just contains the reference of arr. So I'll explain what deep copy and shallow copy is. Don't worry, I'll explain that. Don't worry. Cool. So now what we do, in order to actually copy it, we do this dot 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 arr. So what this dot 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 exactly does is basically it takes the value inside the arr, whatever the array is, it takes the value inside that particular array and places it over the place where we have used dot 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 arr. So it does this. So it creates a new array in place of giving the reference. Do you understand this? Do you understand this? Achal? Turkar, actually, see, we'll solve the questions. We have a lot of questions, and as we move forward, we'll solve few of there is a separate series on arrays. Like in few days from now, we'll be solving arrays, just arrays. So in the arrays section, we are going to discuss rest, spread. We are going to discuss arguments separately, the arguments topic. And there are a few more for each higher order functions and few more. So don't worry about that one. I'll explain everything because the time is limited and I need to complete all of these questions. So I'm moving forward right now. So we are going towards question number 3. Question number 3 is simple again, which says write a function, a JavaScript function. Okay, why not? Let's write a JavaScript function first. So I'll create a function. Okay, write a JavaScript function to get the first element of an array. Okay, so getter नाम से एक function बनाया. So function getter, it takes an input. We have a getter function over here. It can take an input, right? So we'll come here, getter, and we can offer it some values, right? 1, 2, 3, and 4. So it takes an input. So understand the question first. So write a JavaScript function to get the first element of an array. Okay. So a function which gets the first element of the array. But if we pass a parameter n, it will return the first n elements of an array. If you don't understand the question, so if we pass just array, it will return just 7, right? But if we pass first and we also pass, let's see over here. If we also pass first and we also pass the particular number, that will give us these 3 numbers, right? Do you understand that? Do you understand that? Come on, do you understand that? Yeah. Cool. So let's go. So let's go. So if we solve this, okay. Okay. See, let me explain. There's an array, right? 1, 2, 3, 4, 5. And what the question is saying, if you'll just pass the array, it will return the first element like this. If we just give the array to the function, it will return the first element. Do you understand that? Do you understand that? Come on. Do you understand that? Come on. Cool. So if we just pass the array, it will give us the first element of the particular array, right? And
if we pass the array and also 3, let's say 3. So what it will give us? It will give us the 3 elements, 1, 2, 3. Do you understand this? Do you understand this? Come on. Yes. Okay. So as it says, if we have an array and if we just give the array as an input, it will give us the first element inside the array brackets. Cool. And if we give the array and also a particular number, let's say 5, it will give us the 5 elements of the array. Do you understand that? Come on. I'm also going to discuss the other cases. Don't worry, Shubham. I'm also going to discuss the array, other cases as well. Don't worry. Okay. So let's go. So now we are going to solve this question. In the getter, I have given just the array, so it should return us. It should return us what? It should return us just the first member of the array, which is 1 inside the array brackets, right? Do you understand that? Come on, do you understand that? And later we are going to learn about something called default parameters. Yeah, default parameters. If we understand the default parameters, we will be able to answer this question. If we understand the default parameter, we will be able to answer this question. Yeah, so let's go. Now we have to learn something called default parameters. See, it's an extremely easy thing. It's an extremely easy thing. We have a function getter input, right? I just executed that function, getter function. I called it without giving anything. Can you guess what the value of input would be? INP would be. Can you guess what the value of INP would be? Come on. Can you guess that? You should be able to, yaar. Come on. You should be able to. No. Rajkumar Malpani, no. Shh. Like, nobody knows it. Are you serious? Nobody knows. Undefined, yes. Okay, let's see. Am I wrong? Let's see. I can be wrong. Let's see. Anybody can be wrong. But right now I'm not. The value is undefined. So now we have a function, and if we don't offer any value, the parameter gets the default value, which is undefined, right? In the JavaScript, there is a default value which is undefined. When you create a variable and you don't offer any value to it, the default value the variable gets is undefined. In the other languages, it gets the garbage value, but in the JavaScript, it gets the undefined. Yeah. So we know this thing, right? Now I'm going to explain you something called default parameters. What exactly it is? Basically, when we have a parameter and we can set a particular value during the parameter phase, we can set like this. We can say by default input is equal to 1. Let me zoom in. By default input is equal to 1. If we don't offer any value, previously, if we didn't offer any value, previously it was undefined. INP value was undefined, right? Let's see what that would be in this case. It's gonna be 1, right? But if we offer some value, INP's value is gonna be that particular value which you have offered. Do you understand this? Come on. Do you understand that? Cool. Yeah. Do you understand that? Nice. So if we don't offer any value, the default value of that particular input is gonna be 1. If you offer some value, the value will be the particular value which you have offered. Yeah, nice. Let's go. So what we're going to do? We are going to receive an array. Okay. We are going to receive an array over here, 6, right? So we are going to receive an array over here inside the input. Just a minute. And we are also going to receive, let's say, what exactly it was asking me to do. To get the first element of an array, passing a parameter and will return the first element. Okay, take it. So I can say, get maybe whatever the name is, like I'm not getting any name right now, so I'll set it to get. Okay, cool. So if we don't offer anything, the gets value would be by default it would be 1, right? So now what we can do is we can create a for variable, for variable. Like what the fuck is
not for variable, for loop. And we can have and we can have a cloned array, right? So inside the for loop, we'll go from 0, we'll go till whatever the get is, and we'll continuously move forward. And we'll do this clone dot push, and push inputs. Input is the array, push inputs that particular number. So what is going to happen now? By default, when we called this getter function with the array, so INP received this array, right? And the function created a blank cloned array, right? Later onwards, the loop started from 0th index, right? And goes till whatever the get's value is. We haven't set anything from here, so get receives the default value 1. So it goes to less than 1, right? If i's value is less than 1, which is 0, it's actually less than 1. So it will run just 1 times. So this loop will run 1 times. So clone will get 1 value, and what that value would be, INP is the array, and I is 0. So INP 0 goes 1, and cloned array will get 1 inside it. And now if we return this, now if we return the cloned array, we'll get an array containing just 1 value. So we solved the first case, right? Were you able to understand this? Come on. Do let me know. At least I would like to know whether you people are getting it or not. If not, I'll try to explain. Yeah, cool. Okay, nice. So why always start with 0 index? Because that's how they are made. That's a question, like why baby is always born after shadi? Why not before? Because that's how it should happen. Right. Nivesh बोल रहा है एक बार फिर से. Okay, cool, Nivesh, I'll try to explain. So what's happening over here, Nivesh? See, there's a function called getter, right? And that getter function actually receives an array as an input, and over here input contains the array, right? And we have set some value called get, and the default value is 1. So what is happening over here? We have not given any other value than array. So getter will already receive this array as an input, and get will receive the default value 1. Now, when the function runs, we are going to create a blank array which is called cloned. Now what is happening? This loop will run for whatever value the get contains. Get contains 1, so this loop will run for the 1 times. You need to be good with the loops. Good, at least not good. You should be understanding the loops, because in this session I'm not gonna teach what loops are, because we are solving the questions, right? We're not here to teach loops. So we're not here to learn loops, obviously, and I'm not here to teach loops. I'm here to actually teach you how to attempt the question, how to resolve those questions. That's what we are here for, right? So for loop, what basically it does, it runs again and again until this particular value gets, this particular condition gets satisfied. If this condition gets unsatisfied, it straight away stops. This is what for loop is. So for loop, we are going to start with 0, and because get is by default 1, so it should just run for 1 times. And what we are doing inside the for loop, in the cloned array, we are pushing a value. What value? The value input array contains the 0th index value, right? Input array 0th index value, which is 1, and we'll be pushing this value inside the cloned array. So inside the cloned array, we'll get just 1, right? And we are going to return that particular array. That's about it. Can we change the default value so that the loop will run more than 1 time? Yeah, we are going to do that, my friend. That's what the second case is asking for. If we do this, it will give us 2 values. If we do this, it will give us 3 values. If we do -3, it will give us blank. So come on, friends, were you able to understand this? Now we are moving towards the question number 4. Time is
Clock is actually asking us to finish the chat, but because we haven't finished the question, we cannot finish this chat. So we need to finish the question first. Let's go. So let's go. So now the next up, now the next up is basically it's asking us write a JavaScript program to join all the elements. Okay, nice. So we'll do this. So basically let's create a function, joiner. Let's name it joiner, and over here, my friend, over here we will have joiner, and we can give it an array. Let's say apple, we can say banana, banana, and we can also say, I don't know why, but guava, and maybe a cat. Seriously, I really don't know why I'm actually placing cat in place of all fruits, but it's all right. We can say pipalani. Some Bhopali taste, why not? So now joiner function contains an input, and that input actually takes an array, right? So now what the function is asking us, what that question is asking us to do is, it's asking us to reply or return a straight string with a particular character attached. So it's asking us to return a string, sometimes with commas, sometimes with plus. Can we do that? Yes, we can. How? A single statement, bits pipelani. Yes, return and do this. Input is the array, right? Input is the array. Dot join on the basis of what? Comma. Will that give us what we have asked for? Yes, it will. Yes, it will, my friend. See, we have apple, banana, guava, cat, and pipelani all separated by commas, right? And if we do this plus operator over here, it will give us all of the array members added with like concatenated with plus operator plus sign. So if you don't understand what I was explaining right now, you can try this one again. So you can have an array, any array you want, and you can place dot join after it. Dot join, right? And if you leave just that, it will give you this. That's it. And if you do this and you actually place, let's say plus, so it will join all, the join method will join all the members of the array with plus operator. Do you understand that? Come on, do you understand that? Do you understand that? So we were able to solve this question again, like question number 4. Now few of the theory question. Let's go. Few of the theory questions so that we finish this session. Few of the theory questions, right? So question number 5, possible ways to create an object. There are actually 7 ways to create an object, but I'm not going to tell you all of those. I'm going to tell you 3 to 4 ways which are something which you should know as a developer, right? As a developer. So first way is this way. This is called object literal. Just a minute. Let me write it over here. Object literal, right? This is first way to create an object, and we all know this one, right? We are all very familiar with this one. So we all know this particular way to create an object. This is called object literal. Now there is another way. And the way we are going to talk about is capital O object dot create, and we can offer any value like null or something. It will create an object. So I'll get an object. We can see over here. So here's the object, right? And if we don't write null, what will happen then? It will give us an error, like some error, right? We need to write null over here like this, and that will create an object, right? So that is another way. We can say by using object create method. Nice. And what is the third way to create an object? It's basically function constructor. So we can create a function. Like this, and we can say this dot name, and that will take any name you want, right? Harsh. And that's about it. Now if we do this new ABCD, whenever we call some function with keyword new, so just do one thing for me. Just imagine whenever we'll say new word, new keyword, that will create an imaginary object, right? So the moment you see what? New, create an imaginary object like this. Create an imaginary object in your brain, right? So just create an imaginary object, and now run this particular function. With the new keyword, we created an object, right?
with this function, we are going to go inside the function, and whenever you see this keyword over here inside the function, just put that imaginary object in place of that. So what we are saying is, after this, what is written? Name, right? So that imaginary object is gonna take name inside it, and the value would be Harsh. So whenever we do this, new ABCD, new will actually create a new object, object literal, and when we are running this ABCD function, we are going to move inside the function, and whenever we see this keyword written over there, so this particular keyword, this keyword will actually get an blank object in place of that, and we are going to say dot name, we move inside that blank object, and we are going to set a property inside that particular object name, and the value would be Harsh. Yup. निवेश एक्चुअली सीन ऐसा है कि देर आर मैनी पीपल जो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि थोड़ा सा समझ नहीं आ पाता कि क्या है, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेजॉरिटी लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल तो होते ही हैं, और धीरे धीरे मैं भी थोड़ा सा बोलने में फ्रिक्वेंट हो जाऊंगा, बट इट्स ऑल राइट. ओके, विल ट्राई आवर बेस्ट टू मिक्स थिंग्स अप. ओके, कूल. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू नेक्स्ट इज, मैं हिंदी में थोड़ा सा समझाता हूँ. सी function ABCD, right? This dot name Harsh. Nice. So whenever we call a particular function, जब भी हम एक फंक्शन को कॉल करेंगे विद द कीवर्ड न्यू, तो न्यू क्या करता है? न्यू एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट आपको देगा, ठीक है? सो जस्ट क्रिएट अ ब्लैंक ऑब्जेक्ट, राइट? न्यू की वजह से आपने एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया. अभी आपने क्या कॉल किया? ABCD. नाउ मूव इनसाइड द ABCD, एंड व्हेनेवर वी सी दिस कीवर्ड रिटन ओवर देयर, कहीं पर भी अगर तुम्हें ABCD के अंदर क्या लिख जाए? दिस कीवर्ड दिख जाए, तो उसी वक्त अपने मन में जो तुमने ब्लैंक ऑब्जेक्ट बनाया था, उस ब्लैंक ऑब्जेक्ट को इसकी जगह पर रख दो. तो बेसिकली हम यहाँ पर क्या रख रहे हैं? ब्लैंक ऑब्जेक्ट. ब्लैंक ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखा है? डॉट. डॉट मतलब हम उस ब्लैंक ऑब्जेक्ट के अंदर चले गए, और अब बात किससे हो रही है? नेम. तो ब्लैंक ऑब्जेक्ट के अंदर एक नेम नाम से कुछ बनेगा, जिसकी वैल्यू क्या सेट हो जाएगी? हर्ष. डू यू अंडरस्टैंड दैट? भाइयों, क्या आपको ये समझ आ रहा है? क्या समझ आ रहा है? कम ऑन. हर्ष पटेल, डोंट डू दिस. I love you too. ठीक है. ठीक है, नाइस. ओके, ठीक है, perfect. So where obj3, and now we have obj3 over here. Let's see, we have an object, right? So I've told you the three ways, and जाते जाते एक और बता देता हूँ. Class ABCD, ठीक है, and there's a constructor function. Let's say कंस्ट्रक्टर फंक्शन, ठीक है, एंड कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाया, ठीक है, नहीं बनाया कोई बात नहीं. एक वैल्यू 12 रख दी हमने, ठीक है, एंड मैंने यहाँ पे न्यू ABCD को कॉल किया, एंड वेयर आंसर ले लेते हैं इसका जरा. वेयर आंसर, ठीक है. सो इफ़ वी गो देयर, सो आंसर इज़ बेसिकली एन ऑब्जेक्ट. सी, तो दिस इज़ द फोर्थ वे टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट. सीधा समझना गोलू. व्हेनेवर यू सी दिस न्यू कीवर्ड, इसका मतलब ही क्लियर कट है कि ऑब्जेक्ट बन जाएगा. डू यू अंडरस्टैंड दिस? या दिस रिफर्स टू द एम्प्टी ऑब्जेक्ट. अरे बहुत गोलू, बहुत ईजी है. डोंट कंफ्यूज थिंग्स. व्हेनेवर यू सी द न्यू कीवर्ड, दैट मीन्स क्लियरली वी आर टॉकिंग अबाउट अ ब्लैंक ऑब्जेक्ट. या, कूल. सो वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्लैंक ऑब्जेक्ट, सिंपल एज दैट. नाइस. ओके, ठीक है. सो now we just had a chat about possible ways to create an object. What is this call, apply and bind? See, I'm skipping this question right now because I believe chat थोड़ी लंबी चली जाएगी. Should I skip the question or मेरे को बताना चाहिए, या मेरे को सबसे लास्ट में आना चाहिए इस पे? Constructor function definition is same as class name or we have to write constructor? नया ये जो यहाँ पे JavaScript पे जो constructor function है, this is different. See, मैं कैसे बताऊँ? जावास्क्रिप्ट में आपको कंस्ट्रक्टर ऐसे बनाना पड़ता है. बाकी लैंग्वेजेस में जो जावा था ना, जावा में आप अलग तरीके से बनाते. आई एम सॉरी, जस्ट अ मिनट. जावा में आप कंस्ट्रक्टर कुछ ऐसा बनाते थे कि आप यहाँ पर ही लिख देते थे ABCD, राइट, जिसका नाम सेम होता है क्लास से, उसे हम कंस्ट्रक्टर बोलते हैं. बट या सो उस तरीके से है, राइट. कंस्ट्रक्टर फंक्शन इज़ डिफरेंट माय फ्रेंड. यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है. जावास्क्रिप्ट ही डिफरेंट है भाई साहब. यहाँ पे क्लास इज़ नॉट क्लास इज़ जस्ट अ सिंटैक्टिकल शुगर. इट्स बेसिकली रैपिंग ऑफ फंक्शन, दैट्स इट. फंक्शन की रैपिंग है क्लास जावास्क्रिप्ट में. इट्स नॉट रियल फंक्शन, इट्स नॉट रियल क्लास, आई एम सॉरी.
क्लास इज नॉट रियल क्लास। एक्चुअली जावास्क्रिप्ट में सब कुछ फक्ड अप है, टू बी ऑनेस्ट। मतलब मैं आपको बताऊं, अरेज आर नॉट अरेज, दे आर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। क्लासेस एट द एंड ऑफ द डे, लेट्स सी, टाइप ऑफ क्लास इज अनडिफाइंड, ठीक है। एंड इफ वी क्रिएट अ क्लास, लेट्स से टाइप ऑफ क्लास ABCD that says कि unexpected identifier labra lesson कुछ भी, right? Let's go, let me create a class ABCD, let's go. And if I say type of AB, just a minute, can I say that? Yeah, see, at the end of the day, what it is? Function, right? So if we create a class, it's not class, it's basically some wrapper of functions, right? Class is not class. This is a different language, my friend. बहुत अलग सी लैंग्वेज है, पता नहीं बहन चो क्या बनाया है, कुछ भी बना दिया है, ठीक है। लिटरली कुछ भी बना दिया। मतलब मेरे को काफ़ी अच्छी भी बहुत अच्छी लगती है जावास्क्रिप्ट, टू बी ऑनेस्ट। मेरे को जावास्क्रिप्ट बहुत पसंद है, बट बहुत सारी ऊपर नीचे चीज़ें कुछ भी हैं बेंगड़ा, ऐसा लगता है पता नहीं क्या पढ़ रहे हो, पता नहीं। मतलब देखो ना यार, मतलब ये क्या चूतिया बनती है, 0.1 + 0.2 गोज 0.3000 समथिंग लाइक। एंड बहन चो दी, चलो ये भी ठीक है, अरे प्लस अरे, what exactly is that? Like it becomes blank string, why? And blank object plus blank object, see, blank object plus blank object becomes none, why? Why, my friend? Type of not a number is number, why? So लैंग्वेज ही बड़ी गजब सी है, इसलिए चीज़ें थोड़ा उल्टी होती हैं। बट हम एक काम करेंगे, we'll cover this topic at the last, in the last, right? So what is an HOF? What is a HOF? So बहुत easy है, higher order functions, HOF, ठीक है। हाई ऑर्डर फंक्शन, व्हाट एग्जैक्टली इट इज़? हाई ऑर्डर फंक्शन क्या होता है भाई साहब? एक ऐसा फंक्शन जो कि फंक्शन को ही एक्सेप्ट करे एज अ पैरामीटर। देखो, मैंने यहाँ पे फंक्शन बनाया ABCD, ठीक है। फंक्शन बना लिया ABCD, ठीक है। ABCD फंक्शन बन गया। ABCD फंक्शन में मैंने पैरामीटर ले लिया, लेट्स से इनपुट INP, ठीक है। और यहाँ पे मैंने 12 दे दिया, तो वो 12 क्या में चला जाएगा INP में। क्या आप ये समझ रहे हो भाइयों? ये समझ आ रहा है क्या? उजी खान, आई लव यू टू। उजी खान, आई लव यू टू। राहुल बोल रहे हैं फर्स्ट लव जावास्क्रिप्ट। जी हाँ। जुनैद, मैंने आज, अगर आप नोड के बैच में हो N14 में, तो मैंने ऑलरेडी बोला था पढ़ने के लिए। आज नहीं बताऊंगा, कुछ लोग स्टूडेंट्स उस बैच के होंगे। कल जब बैच में बताऊंगा तो अगले लाइव में आपको एक्सप्लेन करूंगा एग्जैक्टली क्यों। कल मुझे उस बैच में बताना है, तो मैंने उनको टास्क दिया पढ़ने के लिए। मैं सीरियसली नहीं चाहता कि यहाँ पे बता दूँ वो सब बिना पढ़े पढ़ाए आए, ऐसा नहीं चाहता मैं। एक्सप्लेन करूँगा, डोंट वरी। कल बैच में एक्सप्लेन करूँगा, उसके बाद लाइव में एक्सप्लेन करूँगा। थोड़ा पालती मार के बैठ जाऊँ यार, ज़रा पैर वैर दर्द हो रहे हैं। अच्छा, उत्कर्ष बोल रहा वॉज जस्ट स्टडिंग, सॉ योर वीडियो। थैंक यू उत्कर्ष फॉर बीइंग हियर, ठीक है। अभी लेट्स गो। सो वी हैव एन ABCD एंड वी आर गिविंग व्हाट 12। तो सुनो, तो इनपुट में क्या आ गया? 12 आ गया। लेकिन सुनो तो, इनपुट मैं जो भी यहाँ से पास करूँगा इनपुट में तो वही जाएगा, सही है ना? मैं जो भी पास कर दूंगा इनपुट में वही जाएगा, राइट? तो मैंने क्या पास कर दिया इनपुट में? मैंने पास कर दिया फंक्शन। तो इनपुट में क्या गया? फंक्शन गया। क्या ये समझ आया तुम लोगों को? कम ऑन, ये समझ आया क्या? तो इनपुट में क्या आया हुआ है? फंक्शन आया हुआ है, राइट? और इस फंक्शन में मैंने ए की वैल्यू क्या रखी हुई है? 12। इस फंक्शन में मैंने ए की वैल्यू क्या रखी हुई है? 12। तो अभी मैंने क्या किया? इनपुट को एग्जीक्यूट किया, ठीक है। और चलो देखते हैं क्या हम ए की वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं। बड़ा मज़ा आएगा। ये बोलेगा नहीं भैया आपने फंक्शन कौन सा वाला यूज़ किया? ये वाला। तो ए कहाँ बनाया था? यहाँ पे। तो आप यहाँ पर इसके बाहर तो यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन मैं पॉइंट ऑफ व्यू मेरा वो नहीं था, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू वो नहीं है। आप समझो मेरी बात को। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? देखना इंटरेस्टिंग देखो। ये बोलता है ए की वैल्यू को प्रिंट करेगा। ए की वैल्यू को क्या करेगा? प्रिंट। देखना मज़ा आएगा। सुनो तो बात सुनो। ABCD के अंदर क्या गया? फंक्शन गया। ABCD के अंदर एज अ पैरामीटर हमने एज एन आर्गुमेंट क्या दिया? फंक्शन दिया, राइट? और यहाँ पे INP में क्या आया? INP में क्या आया? फंक्शन आया। INP में फंक्शन आया। तो अगर मैं INP वाले फंक्शन को कॉल करूँगा तो कौन सा फंक्शन चल जाएगा? ये वाला फंक्शन, राइट? और ये क्या मांग रहा है? ए की वैल्यू। तो अगर मैं इसके पहले ही ए की वैल्यू निकाल लूँ और तब INP को कॉल करूँ, विल दैट गिव अस एन आंसर? अगर मैं ए की वैल्यू इसके पहले ही निकाल लूँ, विल दैट गिव अस एन आंसर? नो, इट डजंट। सी, आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड वेयर ए,
and now I've run that function, I've executed the function. Is it giving us the answer? No. So basically सीन क्या है, समझना, बड़ा ध्यान से समझना, ठीक है, मज़ा आएगा, मज़ा आएगा। एक ऐसा फंक्शन जो कि फंक्शन को एक्सेप्ट करे, एक ऐसा फंक्शन जो फंक्शन को एक्सेप्ट करे, एक ऐसा फंक्शन जो फंक्शन को एक्सेप्ट करे और या फिर रिटर्न करे फंक्शन को, उस टाइप के फंक्शन को हम कहते हैं हायर ऑर्डर फंक्शन, ठीक है। तो अपन एक काम करते हैं, एक डेमो देखते हैं। ABCD को कॉल किया, ABCD को कॉल किया और लेट्स से मैंने यहाँ पर दे दिया है 10 दे दिया है। तो इनपुट में क्या आया, इनपुट में 10 आया और मैंने यहाँ से रिटर्न किया एक और फंक्शन जिसमें लिखा हुआ है लेट्स से जिसमें लिखा है रिटर्न करो जो भी इनपुट में है प्लस जो भी इनपुट 2 में है, रिटर्न इनपुट में जो है प्लस जो भी इनपुट 2 में है, ठीक है। तो अब सीन समझना, मज़ा आ जाएगा। सी एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड है, एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मज़ा आएगा, इतनी गारंटी है, इतनी गारंटी है। पहले फंक्शन को मत पढ़ो, बारी बारी अपन इसको कॉन्कर करेंगे, देखना मज़ा आएगा। ABCD फंक्शन है, मैंने उसमें क्या दे दिया, इनपुट में लेट्स से मैंने दे दिया 10, ठीक है। तो ABCD फंक्शन को क्या मिला, 10 मिला। तो और उसने रिटर्न क्या किया, एक फंक्शन रिटर्न किया जिसमें लिखा है इनपुट की वैल्यू क्या थी 10, तो इसकी जगह तो 10 आ गया, राइट। और इसकी जगह अभी तक कुछ नहीं आया है और रिटर्न क्या किया उसने, फंक्शन। तो इस ABCD ने क्या, इस ABCD की जगह क्या आएगा, एक फंक्शन आएगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस? जब मैं इस ABCD को कॉल करूंगा तो रिटर्न क्योंकि फंक्शन हुआ तो इसकी जगह फंक्शन आएगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस? जब मैंने ABCD को कॉल किया और क्योंकि ABCD रिटर्न कर रहा है एक फंक्शन, तो ABCD जहां पे लाइन नंबर 7 पे कॉल हुआ है उसकी जगह पर एक फंक्शन आएगा, राइट। अब देखो कुछ लोग चैट्स को छोड़ के जाएंगे बट इट्स ऑल राइट, सी दैट्स हाउ थिंग्स शुड बी। मैं अपना बेस्ट ट्राई करता हूं कि आप लोगों को समझ आए। देखो इस जगह पे मैं यूट्यूब पे सिर्फ बातें करने नहीं आता, मैं आपको सिखाने आता हूँ। आई वॉन्ट के आप लोग सीख पाओ और मैं आपके लिए कुछ भी अगर कर पाऊँ तो वो मैं करने यहाँ पे आता हूँ, बस ऐसा समझो। तो इसकी जगह ABCD की जगह फंक्शन आएगा, मैं उस फंक्शन को स्ट्रेट अवे वापस से कॉल कर दूंगा और मैंने यहाँ पर क्या दिया है 20, ठीक है। और अब इसकी जगह पर क्या होने वाला है, सुनना ध्यान से। ABCD फंक्शन कॉल किया विथ वैल्यू 10, ठीक है, जिसने रिटर्न किया एक और फंक्शन, तो इसकी जगह पर ये फंक्शन आ गया, ठीक है। और मैंने उस फंक्शन को क्या वैल्यू दे दी 20, जिसने रिटर्न किया 10 + 20, तो इसकी जगह पर आया होगा 30। लेट्स प्रिंट इट, लेट्स प्रिंट एंड सी। क्या आपको ये समझ आया भाइयों? ABCD is a higher order function. ABCD is an higher order function. It returns a function, right? So if a function returns a function, that's basically a higher order function. If it accept a function as a parameter, that's also a higher order function. या तो पैरामीटर में एक्सेप्ट करे तो भी हायर ऑर्डर फंक्शन, और या फिर रिटर्न करे तो भी हायर ऑर्डर फंक्शन, ठीक है। मैं आपको एक डेमो और देता हूँ। दिस एन अरे, ठीक है। अगर मैंने अरे पे एक फॉर ईच लगाया, फॉर ईच में फंक्शन दिया, आप देखो तो फॉर ईच बेसिकली एक हायर ऑर्डर फंक्शन है। इफ अ फंक्शन एक्सेप्ट अ फंक्शन, समझ रहे हो आप, हायर ऑर्डर फंक्शन, राइट। तो अब हमें हर बार एक वैल्यू मिलेगी। वेल ऐसा कोई भी फंक्शन जिसके अंदर फंक्शन आ रहा है तो वी कैन कॉल दिस पर्टिकुलर फंक्शन है हाई ऑर्डर फंक्शन, उसको हम हाई ऑर्डर फंक्शन कह सकते हैं। मैप ये भी हाई ऑर्डर फंक्शन है, फिल्टर ये भी हाई ऑर्डर फंक्शन है, राइट। सो ऐसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, हायर ऑर्डर फंक्शन कहते हैं। सो ये टॉपिक हम करेंगे अब यहीं पर फिनिश, और अब हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। डिफरेंस बिटवीन वेर लेट कॉन्स्ट बहुत ईजी है, और आगे के क्वेश्चंस आई बिलीव हम नहीं कर पाएंगे, मैं लिस्ट को छोटा कर रहा हूँ। दिस वुड बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज़। इवन हम ये भी नहीं कर पाए, अगली सीरीज़ में से टारगेट करेंगे। तो अभी हम इतना ही रखेंगे बिकॉज आई बिलीव यहाँ पे लोग कम है चैट पे। सो पता नहीं, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद उतना पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा। क्लोजर बिल्कुल आप सही कह रहे हो गौरव, बट ठीक है अभी ज़्यादा उस पर डिटेल्स पे बात नहीं करेंगे। लेट्स गो। अरे यार क्यों, क्या हुआ राइट। डिफरेंस बिटवीन वेर लेट एंड कॉन्स्ट आखिरी टॉपिक है आज का। लेट्स गो।
सो वैर लेट एंड कॉन्स्ट बहुत ईजी है. वैर बेसिकली जो है वो ES5 है, ES5 में बना हुआ है. ठीक है. लेट एंड कॉन्स्ट ES6 है. ठीक है. नंबर 1. वैर जो है वो फंक्शन स्कोप्ड होता है, फंक्शन स्कोप्ड होता है, मैं समझाऊंगा. और ये जो लेट एंड कॉन्स्ट है ये ब्रेसेस स्कोप्ड होते हैं. ठीक है. नाइस. ओके. अब उसके बाद अगला फ़र्क जो है, वैर खुद को विंडो में ऐड करता है और ये लोग खुद को विंडो में ऐड नहीं करते हैं. ठीक है. डोंट ऐड, डजंट ऐड, ऐसा कह सकते हो. डजंट ऐड, आई डोंट नो मतलब इंग्लिश में क्या रहेगा, डजंट ऐड रहेगा, डोंट ऐड रहेगा, पता नहीं. ठीक है. व्हाटएवर इट इज. सो विंडो में वो खुद को ऐड करते हैं और ये वाले ऐड नहीं करते. सिंपल. ठीक है. तो अभी ध्यान से सुनना. मैंने एक वैर बनाया 12. तो सबसे पहले तो ये कि वैर बेसिकली ES5 है. ठीक है. पुराना जावास्क्रिप्ट का पार्ट है. और अगर मैंने एक लेट बनाया तो वो नई जावास्क्रिप्ट का पार्ट है. तो ये पुरानी जावास्क्रिप्ट का पार्ट है, ये खुद को विंडो में ऐड करता है. ठीक है. अगर आप देखो तो विंडो में A आ चुका है. सी, अगर आपको नहीं पता व्हाट एग्जैक्टली विंडो इज़, तो विंडो इज़ द ग्लोबल मेमोरी व्हेन वी आर वर्किंग इन vanilla JS. What vanilla JS is? Basic purest form of the JS is vanilla JS, right? Whenever we write that particular JS and we add few more things and we write it for the backend creation, it is called Node.js. But जब आप JavaScript को लिखते हो for the front end part, just basic DOM, basic बहुत बिल्कुल बेसिक प्योरेस्ट फॉर्म में, तब वो JavaScript विदाउट एनी लाइब्रेरीज, विदाउट एनीथिंग एल्स, तो वो JavaScript कहलाती है आपकी vanilla JS. अंश, मैं 2 इंटरव्यू में पास नहीं हो पाया हूँ भैया, आप मेरी हेल्प करें. दोस्त आप मुझे बताना किस टाइप से मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ. वाई नॉट, मैं आपकी हेल्प क्यों नहीं करूँगा, बिल्कुल करूँगा. क्वेश्चन 6 करवा दो भैया. क्वेश्चन 6 क्या है यार? क्वेश्चन 6 ओके. हाँ ठीक है, भगना मत, करवा दूंगा. वाई नॉट. ठीक है. सो वैर ए इज़ बेसिकली एड्स इटसेल्फ ऑन विंडो. ठीक है. एंड लेट डजंट एड्स इटसेल्फ ऑन विंडो. अगर हम लेट को भी वैर कर दें तो इट विल ऐड. सी, लेट को भी ऐड कर दें, अगर लेट को भी वैर कर दें तो इट विल ऑल्सो ऐड. सो दैट इज़ द डिफरेंस, राइट. अब आ जाते हैं आखिरी डिफरेंस पे. फंक्शन ABCD and there's a variable var a which goes value 12 and this let's say एक चीज़ और दिखाता हूँ, मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाऊँ. if true. ठीक है. if true and यहाँ पे हमने var a को उसके अंदर मूव कर दिया. और इस वक्त अगर मैं if के बाहर इसे ट्राई करूँगा ना तो इसका आंसर आ जाएगा. जबकि अगर कोई और लैंग्वेज होती ना, इसमें एरर आता आपको. अभी इसका आंसर आएगा. रीज़न क्या है? वैर जो होता है ना वो फंक्शन स्कोप्ड होता है. फंक्शन स्कोप्ड का मतलब होता है नियरेस्ट फंक्शन तक चलेगा. तो वैर का नियरेस्ट फंक्शन कौन है? ABCD. तो अब ABCD में कहीं भी वैर को यूज़ करोगे ना तो इट विल बी अवेलेबल. अब यहाँ पर यूज़ कर रहे हो जो कि ABCD के अंदर है, दैट्स वाई यू आर एबल टू एक्सेस. जबकि वो बना इस ब्रैकेट के अंदर है, फिर भी वैर क्या होता है? फंक्शन स्कोप्ड होता है, तो वो पूरे फंक्शन में कहीं भी अवेलेबल हो सकता है. ठीक है. अब लेकिन जो लेट होता है वो क्या होता है? वो होता है ब्रेसेस स्कोप्ड. मतलब कि लेट को अगर तुमने बनाया यहाँ पे तो नियरेस्ट ब्रेसेस तक चलेगा. नियरेस्ट ब्रेसेस ये हैं. ठीक है. इसके बाहर आप इस लेट को यूज़ नहीं कर सकते. देखो आपने यूज़ किया तो एक एरर आ गया, इज नॉट डिफाइंड. ठीक है सर, दैट्स अबाउट इट. तो ये हमने पढ़ लिए कुछ अच्छे डिफरेंसेस. ठीक है. एक आध और भी होता है, हॉस्टिंग के बारे में डिफरेंसेस होते हैं, बट बिकॉज वी आर नॉट कवरिंग हॉस्टिंग टुडे, सो दैट्स वाई वी आर नॉट गोइंग टू कवर दी हॉस्टिंग डिफरेंसेस वेल. सो वो भी हम कवर नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमने हॉस्टिंग ही कवर नहीं करी, तो फिर वो कहाँ से कवर करेंगे, राइट? But it's all right. We are going to solve this question called question number 6. What is this call and apply unbind? Okay, let's go. So this call apply bind, बहुत मज़ा आएगा इसमें. चलो जल्दी let's go फटाफट. So this call apply bind होता क्या है? सबसे पहले this keyword क्या है? This keyword बहुत हरामज़्यादा गिरगिट टाइप का कीवर्ड है. ठीक है. हरामज़्यादा कीवर्ड लिख सकते हैं हम इसे, हरामज़्यादा कीवर्ड. ठीक है. हरामज़्यादा कीवर्ड क्यों है? क्योंकि अपनी वैल्यू बार बार बदलता रहता है. ठीक है. As we use this keyword in different context, this keyword actually changes value. कहने का मतलब जिस जगह पे this को यूज़ कर रहे हो उसके हिसाब से उसकी वैल्यू होगी. डेमो देता हूँ, डेमो. दिस की वैल्यू ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में, जब तुम ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में से यूज़ करते हो, वेट हट जाओ हरामी, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में जब दिस को यूज़ करते हो उसकी वैल्यू होती है विंडो. ठीक है. अभी मैं शो करूँगा, डोंट वरी. फंक्शन के अंदर अगेन इसकी वैल्यू होती है विंडो. ठीक है. मेथड के अंदर उसकी वैल्यू होती है ऑब्जेक्ट. मैं समझाऊंगा. ठीक है. फंक्शन ES5 इनसाइड मेथड, इसकी वैल्यू होती है अगेन विंडो. ठीक है. एंड फंक्शन अभी समझ नहीं आएगा, अभी बस देखो. ES6 फंक्शन इनसाइड मेथड, इसकी वैल्यू वापस हो जाती है ऑब्जेक्ट. ठीक है.
तो अगर तुम देखोगे कहोगे यार भैंचो चल क्या रहा है, ये मांगड़ा विंडो ऑब्जेक्ट विंडो ऑब्जेक्ट विंडो, तो एग्जैक्टली क्या हो रहा है सुनो मैं समझाता हूँ। ग्लोबल का मतलब किसी फंक्शन के अंदर नहीं, किसी ब्रेसेस के अंदर नहीं, बेसिकली ग्लोबल स्कोप में। अगर हम यहाँ पर इसकी वैल्यू चेक करें तो इसकी वैल्यू क्या है, विंडो है। सी विंडो ऑब्जेक्ट है। अगर आपको विंडो नहीं पता तो अगली बार हम अगले लाइव में वी आर गोइंग टू कवर द विंडो थिंग, तो विंडो समझाऊंगा ढंग से। भैया आप कभी कभी वैर काम नहीं करता है, लेट का यूज़ करना पड़ता है। दोस्त ऐसा तो मैंने कभी सुना नहीं, बट ठीक है अगर आप कह रहे हो तो सही कह रहे हो, गलत कह सकते हो क्या, बिल्कुल तो मान लेते हैं आप गलत ही कह रहे हो फिर। निवेश बोल रहा है भैया सुना है होस्टिंग सबसे ज़्यादा पूछा जाता है इंटरव्यू में। हाँ जी निवेश आपने सही सुना है। जय भवानी, जय भवानी साहब, जय भवानी, आपको भी जय भवानी। ठीक है ओके लेट्स गो। So we have console log this, by default it's returning us window. So now the default value of this keyword is window. Perfect. Now जो अभी हमने देखा, ठीक है। अब अगर आप एक फंक्शन बनाते हो, फंक्शन ABCD, अगर आप इसके अंदर दिस की वैल्यू चेक करोगे, आई एम सॉरी कट जाओ फ़ोन, थैंक यू। अगर आप इसके अंदर दिस की वैल्यू चेक करोगे console.log, एंड अगर मैं इसके अंदर दिस की वैल्यू चेक करूँ तो इसकी वैल्यू अभी भी क्या आएगी, विंडो। अभी भी इसकी वैल्यू क्या है, विंडो है, राइट। सो दैट्स हाउ इट गोज़। अच्छा ओके अब आ जाओ आप मेथड के अंदर। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, नेम की वैल्यू है हर्ष, ठीक है। एज की वैल्यू हो गई 24 एंड देन देयर इज समथिंग कॉल्ड सी नेम, दैट्स अ फंक्शन, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर console log this करूँगा और पता करूँगा इसके अंदर इसकी वैल्यू क्या है, सी, मैं बोलूँगा obj.saName, सुनना। तो obj ऑब्जेक्ट पहुँच गए, डॉट saName तक पहुँच गए और इस फंक्शन को हमने कॉल कर दिया। तो इस फंक्शन के अंदर दिस की वैल्यू क्या है, देखो ऑब्जेक्ट है। यही लिखा था मैंने कि अगर आप एक मेथड बनाते हो, मेथड क्या होता है, मेथड होता है एक फंक्शन इनसाइड ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक फंक्शन को मेथड कहते हैं, ठीक है। बेसिक फंक्शन नहीं कहते, ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर आप एक फंक्शन बनाओगे उसे हम मेथड कहते हैं। नेक्स्ट टाइम में होस्टिंग कवर कर देना भैया। ओके भैया अपन होस्टिंग पढ़ेंगे फिर। हाँ 100% निवेश, वाई नॉट। भाई अगर C++ एंड पाइथन आता है तो JS कवर करने में कितना टाइम लगेगा। मयंक सी रियली डिपेंड्स यार। देखो मैं ऐसा नहीं कहूँगा, सी एवरीथिंग, देखो यार ऐसा है कि अगर मुझे साइकिल चलाना अच्छे से आता है तो बाइक चलाने में कितना टाइम लगेगा, ये कुछ ऐसा क्वेश्चन है। इट रियली डिपेंड्स ऑन द कैंडिडेट, नंबर 1। नंबर 2, बेसिक्स आर ऑलवेज सेम माय फ्रेंड, बेसिक्स आर ऑलवेज सेम। वेरिएबल ही होता है, फंक्शन ही होता है। हाँ एक लैंग्वेज के बारे में जितना जानना मतलब एक अच्छे लेवल तक कैसे जान पाओगे, कितना टाइम लगेगा उसमें, काफ़ी टाइम लगता है। किसी भी चीज़ के बारे में अच्छे से जान पाने में काफ़ी टाइम लगता है, राइट। और मुझे लगता है कि जिस चीज़ में आप अपना करियर बना रहे हो उसमें टाइम के बारे में नहीं सोचना चाहिए। क्या चाहते हो, मतलब जो तुम्हें अपने ज़िंदगी में 45 साल तुम्हारे को सैलरी देगा, जावास्क्रिप्ट या जो भी तुम्हारा करियर है 40-45 साल तुमको सैलरी देगा, तुम उसे 4 महीने देना चाहते हो, सीरियसली। मतलब उस तरीके से सोचोगे तो तुम्हें हमेशा अच्छा फील होगा कि तुम्हें ज़्यादा टाइम देना चाहिए। बाकी तुम्हारा खुद का भी पर्सपेक्टिव होगा उस पर। भैया मैंने पिछले बार कहा था आप प्लीज़ Node.js का एक प्रोजेक्ट फुल डाल दीजिए यूट्यूब पर, फुल प्रोजेक्ट। टेक बाय, इट्स समथिंग जो आपने मांग लिया वो काफ़ी डिफिकल्ट है मेरे लिए, बिकॉज आई एम नॉट जस्ट अ यूट्यूबर, मैं एक फैमिली भी चलाता हूँ यहाँ पे शेरियंस कोडिंग स्कूल नाम से। थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा मेरे लिए पूरा प्रोजेक्ट डालना Node.js का, because at Sharians we take care of our people and they pay to us for the same, so we do take care of them as well। तो बट फिर भी अगर मैं कुछ कर पाऊँगा इसके लिए तो ज़रूर करूँगा, इतना कह सकता हूँ। भैया 3JS का शॉर्ट ट्यूटोरियल अपलोड कर दीजिए भैया प्लीज़। ओके ठीक है, वाई नॉट। मैंने अभी रिसेंटली कुछ अच्छी चीज़ें सीखी 3JS में, आई विल डेफिनेटली अपलोड, ठीक है बिल्कुल। वाई ए इज़ अनडिफाइंड, वाई वेयर इज़ ए अनडिफाइंड, वेयर इज़ ए अनडिफाइंड, आई डोंट नो। तो आप बात कर रहे हो फंक्शन ABCD फंक्शन CD वेयर इज मैंने ABCD फंक्शन को चलाया, चल गया, फिर अपन अंदर आए, फंक्शन CD को चलाया, वो भी चल गया, फिर उसके बाद वेट हाँ क्यों नहीं होगा, जब आपका फंक्शन कंप्लीट हो गया CD तो वैर का एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट भी उसी के साथ, फंक्शन CD का एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट भी उसी के साथ ख़त्म हो गया। तो वैर जो A बनाया था आपने CD के अंदर, जब फंक्शन ही ख़त्म हो गया तो आप उसके बाद उसे जैसे console log A को आप कॉल कर रहे हो तो वो क्यों आएगा, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि आपने console log A पहले चला दिया, CD बाद में चलाया। तो console log A पहले चलेगा और CD बाद में चलेगा, और A क्योंकि आपने CD बाद में चलाया फंक्शन, तो इसीलिए वो फंक्शन बाद में चल रहा है, तो A बाद में डिफाइन होगा और
console log a बेसिकली पहले चल जाएगा तो a इज अनडिफाइंड, दैट्स द रीज़न। अब वंस HTML और अब वंस CSS का कुछ बता दो। अब वंस का मतलब मैं समझा नहीं दोस्त, बट इट्स ऑल राइट, पहले दिस को कवर करते हैं। तो मेथड जो यहाँ पर है दैट इज़, अगर मेथड के अंदर आप दिस की वैल्यू चेक करोगे दैट्स ऑलवेज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। फाइनली वी आर फिनिशिंग ऑफ, बस 5 मिनट रुको आप लोग, बस 5 मिनट, ठीक है। अब आते हैं फंक्शन ES5 इनसाइड मेथड। तो बेसिकली दिस कॉल अप्लाई बाइंड, तुम सोच रहे हो कि क्या है। मैं एक काम करूंगा, मैं तुम्हें इतना बताता हूँ अभी, दिस के लिए बस इतना समझो, ढंग से दिस कवर करेंगे अगले वीडियो में। बट कॉल अप्लाई बाइंड ये इंपॉर्टेंट है। कॉल अप्लाई बाइंड क्या होता है, देखना। देयर इज अ फंक्शन ABCD, देयर इज अ फंक्शन ABCD। इसके अंदर बाय डिफॉल्ट दिस की वैल्यू क्या होती है, अभी मैंने बताया था। इसके अंदर बाय डिफॉल्ट दिस की वैल्यू क्या होती है भाई, इसके अंदर बाय डिफॉल्ट दिस की वैल्यू क्या होती है, इसके अंदर बाय डिफॉल्ट दिस की वैल्यू क्या होती है, विंडो। या सो अगर हम बात करें ABCD इज अ फंक्शन एंड बाय डिफॉल्ट दिस की वैल्यू उसके अंदर क्या होती है, विंडो। सो PHP के इंटरव्यू क्वेश्चन, आई एम सॉरी PHP के इंटरव्यू क्वेश्चन मैं तो नहीं कर सकता, लेकिन धनेश भैया कर सकते हैं, तो मैं उनसे बोल दूंगा किसी दिन आप ज़रूर, अगर स्टूडेंट्स को PHP के इंटरव्यू क्वेश्चंस बता सकें। बट मैं फिर भी कहूँगा PHP में मत जाओ, Node.js इज़ अ गुड फील्ड, आप उसमें रह सकते हो, इट्स अ नाइस फील्ड टू मेक योर करियर एंड ज़्यादा पैसा भी देगी, ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी देगी PHP के कंपैरिजन। सो मेरा सजेशन यही रहेगा, भैया कोई ऐप का क्लोन बनवा दीजिएगा। 100% मेरे भाई, 100%। भैया एवरीथिंग इन जावास्क्रिप्ट इज एन ऑब्जेक्ट और नॉट एवरीथिंग बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर ऑब्जेक्ट, ऐसा कह सकते हो। मेजॉरिटी ऑफ द जावास्क्रिप्ट इज ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड, लेट्स गो। तो अगर हम बात करें एक बेसिक फंक्शन जो है ग्लोबल स्कोप पे, उसके अंदर दिस की वैल्यू क्या होती है, बाय डिफॉल्ट विंडो होती है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे ABCD को चलाऊँ तो इस वक्त फंक्शन ABCD के अंदर क्या आ रहा है, दिस की वैल्यू क्या है, विंडो है। अब तुम्हें मैं समझा रहा हूँ कॉल समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना। मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं OBJ, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब पूछो कॉल करता क्या है। कॉल के हेल्प से फंक्शन को रन करते वक्त हम डिसाइड कर सकते हैं कि फंक्शन के अंदर दिस की वैल्यू क्या होगी। सुनो, अभी हमने जब लाइन नंबर 3 पे फंक्शन रन किया, लाइन नंबर 3 पे जब हमने फंक्शन रन किया तो बाय डिफॉल्ट इसकी दिस की वैल्यू थी विंडो, राइट। बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या थी, विंडो। कॉल के हेल्प से फंक्शन को रन करते वक्त, जब हम फंक्शन को रन करेंगे ना, तो कॉल के हेल्प से फंक्शन को रन करते वक्त हम डिसाइड कर सकते हैं कि फंक्शन के अंदर दिस की वैल्यू क्या होगी। सो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज बेसिकली व्हेन वी रन दिस फंक्शन विद द हेल्प ऑफ कॉल, वी कैन डिसाइड what the value of this keyword would be inside that particular function. By default, this keyword value is always window inside the function, right? So with the help of method, what we can do is we can set this keyword value inside the function. How we do this? देखो, ABCD फंक्शन है, ऐसा कॉल किया तो दिस की वैल्यू विंडो है। अगर डायरेक्ट ABCD को कॉल किया तो दिस की वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या होती है, विंडो। बट अगर मैं उसे कॉल करूँ विद द हेल्प ऑफ डॉट कॉल, विद द ABCD फंक्शन को विद द हेल्प ऑफ डॉट कॉल करूँ, और इसके अंदर आप जो भी लिख दोगे वो दिस की वैल्यू बन जाएगी। मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ, OBJ। अब देखिए दिस की वैल्यू क्या है, ऑब्जेक्ट बन चुका है। क्या आप ये समझ पा रहे हैं? तो कॉल क्या करता है, फंक्शन को रन करते वक्त उसके अंदर दिस की वैल्यू सेट करता है। मयंक एक्चुअली आज विंडो में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, विंडो एक सेपरेट टॉपिक है, हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। विंडो भी एक्सप्लेन करेंगे, ब्राउज़र API एक्सप्लेन करेंगे, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेन करेंगे, देयर आर फ्यू मोर थिंग्स, ये सेपरेट टॉपिक्स हैं। जय पवार, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट करने से जॉब लगने का चांस है? चांस नहीं, फुल चांस है। और चांस क्या होता है, मतलब इफ़ यू मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ जय, अगर आप ढंग से सीख लोगे तो 100% आपकी जॉब लग जाएगी। भैया DSA कितना इंपॉर्टेंट है वेब डेव जॉब के लिए? मैं कहूँगा ज़ीरो, ठीक है। अगर आप एक बेस लेवल या एंट्री लेवल जॉब ढूंढ रहे हो, ज़ीरो इंपॉर्टेंट है। अगर आप 10 लाख के ऊपर का पैकेज ढूंढ रहे हो तो वेब डेवलपमेंट की बात नहीं हो रही, कुछ भी करोगे उसमें आपको थोड़ा बहुत DSA पूछा जाएगा। अगर आप 10 से 12 से 13 लाख की जॉब ढूंढ रहे हो ना, तो अगर आपका मैं आपको कुछ बेसिक टॉपिक्स बता रहा हूँ, अरे लूप्स, स्ट्रिंग्स, स्टैक, क्यूज, लिंक लिस्ट, ट्रीज, ग्राफ भी छोड़ दो, ट्रीज, ठीक है। अगर आपका वहाँ तक डन है
तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ 12-13 लाख की जॉब आप आराम से क्रैक कर दोगे, कई केसेस में 14 और 15 लाख की भी क्रैक कर दोगे, एंड आराम से क्रैक कर दोगे बोल रहा हूँ। और अरेज, लूप, स्ट्रिंग्स, लिंक लिस्ट, स्टैक क्यू और ट्री, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर आप 4 महीने 3 महीने दम से मेहनत करोगे ना, यू विल बी गुड। ओके, सो या लेट्स गो। सो कॉल समझ आ गया होगा, आई बिलीव सो। अब बात आती है किस पे, अप्लाई। एक्चुअली अप्लाई इज ऑल्सो द सेम, बस फ़र्क कितना है, अप्लाई इज ऑल्सो द सेम, बस फ़र्क कितना है कि अगर आप फंक्शन में यहाँ पे पैरामीटर लेते हो a, b, c, d, तो कॉल करते हो पहला पैरामीटर तो आपको दिस की वैल्यू देनी है, और फिर इसके पैरामीटर्स आप दे सकते हो। कैसे? बस इसको कॉमा लगा के 1, 2, 3, 4, तो ये 1, 2, 3, 4 रिस्पेक्टिवली a, b, c एंड d में चले जाएंगे, और आप फिर उनको भी वैल्यू चेक कर सकते हो। ठीक है, आपको उनकी वैल्यू भी मिल जाएगी, राइट। कॉल क्या करता है, कॉल में आपको इस तरीके से पैरामीटर लिखने पड़ते हैं, लेकिन अप्लाई क्या करता है, अप्लाई कहता है सिर्फ 2 ही पैरामीटर्स देना। पहला पैरामीटर होगा दिस की वैल्यू, और दूसरा पैरामीटर होगा सारी पैरामीटर्स की वैल्यू, जो कि एक अरे के रूप में आप मुझे देंगे। ठीक है, तो अप्लाई हमेशा 2 ही पैरामीटर्स मांगता है। पहला क्या होता है, हमेशा ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट आपको देना है, जो भी आपको दिस कीवर्ड बनाना है। दूसरा चीज़ क्या होता है अप्लाई के अंदर, दूसरी होती है जो भी आपको पूरी वैल्यूज़ देनी है, बट वो होनी चाहिए अरे के फॉर्मेट में। ठीक है, तो ये है अप्लाई, बस इतना सा फ़र्क है। अब आते हैं आखिरी में काय में, बाइंड पे। बाइंड बहुत ईजी है यार, बाइंड बहुत ईजी है। बाइंड क्या है, सेम कॉल जो पढ़ा ना, कॉल जैसा ही बाइंड है, बट एक फ़र्क है, बाइंड कभी फंक्शन को चलाता नहीं है। जैसे ABCD फंक्शन को इसने अभी तक चलाया नहीं है, इसने रिटर्न किया वो फंक्शन आपको बाइंड करके कैसा, फंक्शन ABCD में ऑब्जेक्ट को बाइंड कर दिया, चिपका दिया और रिटर्न किया है। तो आप उसे सेव कर सकते हो आंसर या न्यू फंक्शन में, ठीक है, और इस फंक्शन को आप बाद में जाके कभी चला सकते हो। और बाइंड का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है रिएक्ट में। ठीक है, तो क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे मेथड्स को आपको बाइंड करना पड़ता है दिस से, क्लास से, तो इसलिए वहाँ पे यूज़ होता है काफ़ी ज़्यादा, राइट। तो बाइंड ये है, दैट्स अबाउट इट। नॉन स्टैक के इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, दे लास्ट प्रोबेबली अबाउट जावास्क्रिप्ट कॉन्सेप्ट्स, जो मैं यहाँ पे कवर कराऊंगा वो सब ढंग से पढ़ लेना, उनके बारे में पूछेंगे। एंड आपके नोट जेएस एंड रिएक्ट जेएस एंड मोंगोडीबी के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, दैट्स अबाउट इट। भैया अभी मुझसे बिल्कुल भी वेब डेव नहीं आती है, तो कब तक सीख सकते हैं? अभी मैं BCA सेकेंड ईयर में हूँ। बस शुरू कर सकते हो आप, बिल्कुल शुरू करो, अब ज़्यादा लेट मत करिए। दिस इज़ लाइक अ पॉइंटर, नो, it's not like a pointer, it's a special keyword. It's available in many languages, like it's available in Java, it's available in JavaScript, I'm not sure, but I think so, like it's available in C# as well. I'm not sure about that one, but probably yeah. So this is a special keyword, it changes its value accordingly, like where it's used. This is very very great thing. Why? Because most of the times when we have to reference things up, and when we want to build such a structure that we build everything on the basis of references, this is like something which is heavily used, right? So that's about it, my friends. I believe so you will be getting some insights, you'll be able to understand, and you might have learned something new today, right? कुछ सीखने को मिला, हाँ CPP में भी होगा, आई एम नॉट श्योर, बट CPP में भी होगा। कुछ सीखने को मिला तुम लोगों को, कम ऑन, कुछ सीखने को मिला। ओके, नाइस, बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, फाइन, जाओ अभी रात ज़्यादा हो गई है, खाना वाना खाओ, ठीक है, और मस्ती से सो जाओ दोस्तों, ठीक है, जाओ दफ़ा हो जाओ सारे लोग, खाना वाना खा लो और मस्ती से सो जाओ। और काली वाली वेबसाइट का यूज़ कर सकते हो इफ़ यू वांट, ठीक है, काली वाली वेबसाइट का यूज़ करो, और बढ़िया से नींद ले लो भड़ से। रोज़ तो मैं नहीं पढ़ाता हूँ, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो सकूँ, श्योरली कोशिश करेंगे बहुत जल्दी की। क्योंकि शाम के टाइम पे एक्चुअली बैचेस रहते हैं, तो आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बार आ सकूँ। ओके, बाय दोस्तों, बाय।